So what is in foreign exchange market? I have already told you it can be called as a forex market or FX market. Okay? It is a decentralized global market where currencies are traded. Foreign exchange market में क्या trade होता है? हमारे currencies trade होती है. ठीक है? It is the largest and the most liquid financial market in the world. These all we have discussed yesterday also. I am just briefing it again. Moving on. We have also discussed what were the key participants in the forex market. There were banks, there were corporations, there were speculators, there were brokers, and central banks. And further, there were also arbitrageurs, speculators. We'll also discuss them also today. Moving on, what are the banks? How banks participate in the forex market? Major banks are the largest participants in the foreign exchange market, engaging in transaction for their own accounts and on behalf of their clients. Then comes the multinational corporations. They use the forex market to manage their currency risk and to facilitate international transaction. वो कब use करते हैं corporations? They use it for their business transaction. जो भी उन्हें business transaction करनी होती है, उसके लिए ये forex market को use करते हैं. Then comes the speculators. Speculators किस लिए use करते हैं? The speculator traders such as hedge fund and individual investors, they aim to earn a profit from the fluctuation in the exchange rate. उनका क्या motive होता है? Their motive is to earn through fluctuation in exchange rate. Then comes the central bank. Central bank participate in the forex market to influence exchange rate and implement monetary policy. Central bank क्यों participate करते हैं? To maintain their forex reserves, ठीक है, and to maintain the fluctuation in the exchange rate. ठीक है, सेंट्रल बैंक का ये रोल है फॉरेक्स मार्केट में. व्हाई डू दे पार्टिसिपेट इन द फॉरेक्स मार्केट? क्योंकि उनको फॉरेक्स अपनी एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करके रखना होता है फर्दर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर मॉनेटरी पॉलिसी. आपको कोई भी डाउट है प्लीज नोट इट डाउन. विल डिस्कस इन द लास्ट हाफ एन आवर. Then comes the what are the factors which influences exchange rate. The foreign exchange market, it is influenced by various economic, political, and social factors. This includes the relative inflation rate, interest rate, income level of the country, government controls, economic growth, government policies, geopolitical events, and the market expectation. So now we are going to discuss these factors which influences the interest rate. So our first factor which influences the exchange rate is inflation. So how inflation influences the exchange rate? अगर किसी भी country में when there are low inflation rate होता है, ठीक है, तो लोगों के पास ज़्यादा purchasing power होती है, ठीक है, they will spend more, ठीक है. जब भी inflation कम होता है, people will spend more, ठीक है, क्योंकि आपकी जो products हैं they are available in the market at low cost, ठीक है. तो लोग ज्यादा पैसे स्पेंड करेंगे जिससे क्या होता है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. The currency purchasing power becomes higher than the other currency with which it is compared. So low inflation rate में क्या होगा, आपकी जो करेंसी है it will appreciate, ठीक है. On the other hand, जब भी high inflation rate होगा तो क्या होगा, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है. High inflation rate lead to a currency depreciating in value, losing out on a purchasing power and value against other currency. Then moving on, इसमें किसी को doubt है then please note it down. We'll discuss it later. I think now you guys able to type in the chat box. If you are able to do so, please write something. Inflation, how inflation rate affects exchange rate, is it clear to you? Okay. Then we'll move to our next point, which is interest rate.
इंटरेस्ट रेट अब कैसे अफेक्ट करता है हमारे एक्सचेंज रेट को? जब कंट्री में हाई इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, अगर इंडिया में हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है, तो हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? जब भी मैं कोई इन्वेस्टमेंट करूंगी उस पे मेरे को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में फ्लो इन करेगी, ठीक है, तो हमारे करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉरेन वाले लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे? अपनी करेंसी को इंडियन रुपी में कन्वर्ट कराएंगे, देन दे विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा? करेंसी की डिमांड बढ़ गई तो करेंसी क्या होगी? एप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। If a country has a high interest rate, lenders have a chance to earn more. This attract foreign capital looking to earn at high rates. ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया फॉरेन कैपिटल को क्या मिलेगा? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. The result is that country's foreign exchange rate rises, making its currency stronger. Interest rates are directly linked to inflation as well as the exchange rate. ठीक है. Then comes there is a second point, when the interest rate low, when the interest rate at the low level in the country, तो अब क्या होगा? तब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, क्योंकि इट्स अ केस ऑफ वाइस वर्सा, ठीक है. अ कंट्री सेंट्रल बैंक विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस द इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट बाय इंटरेस्ट रेट मैकेनिज्म. कंट्री का सेंट्रल बैंक कैसे ट्राई करता है इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने का? बाय चेंजिंग देयर एक्सचेंज रेट, बाय चेंजिंग इन्फ्लेशन, सॉरी, कंट्री कैसे, जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट को? बाय चेंजिंग इट्स इंटरेस्ट रेट. हाई इंटरेस्ट रेट मीन अ हाई बोरोइंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. It could happen that despite an interest rate hike, inflation does not come down in any meaningful sense, which will have less than an expected effect on the exchange rate. Conversely, interest rate decreases tend to depress the exchange rate. This we have already discussed. अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो करेंसी एप्रिशिएट करेगी, अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो करेंसी डेप्रिशिएट करेगी. एनी डाउट हाउ इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंसेस एक्सचेंज रेट? Okay, then we'll move forward. Then comes the how government or a public debt influences exchange rate. When a country engages in a large scale infrastructure project, it generally will not have all the fund for them, so it borrows fund domestically as well as from abroad. ठीक है, अगर कंट्री को किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो ऐसा तो नहीं है कंट्री के पास सारे फंड खुद से होंगे, तो उनको क्या करना पड़ता है? बोरो करना पड़ता है. अब वो बोरो डोमेस्टिकली भी कर सकते हैं एंड फ्रॉम अब्रॉड भी कर सकते हैं. These projects stimulates the economy. However, the deficit created by the public debt, it make it an unattractive investment destination. ठीक है, जब जब किसी भी कंट्री का डेट बढ़ता जाता है, ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं उस कंट्री में इन्वेस्ट करने से, ठीक है, क्योंकि अगर डेट बढ़ रहा है किसी कंट्री का, दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू पे बैक देयर लोन्स, ठीक है. तो अगर नहीं पे बैक कर पाएंगे वो अपने लोन, देन देयर विल बी अ चांस कि वो डिफॉल्ट कर जाए, ठीक है. सो इट मेक्स द कंट्री एज एन अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. A large public debt is a recipe for high inflation. That is, the country currency gets weaker and it will need more time to service debt and interest payment, affecting the borrower's return. तो जैसे जैसे public debt बढ़ जाएगा, currency की value depreciate हो जाती है. If the country has to default on its loan because it cannot pay it back due to the enormous debt, high inflation and the depressed exchange rate. This we have already discussed कि अगर ज्यादा लोन हो जाएगा कंट्री का, they will not be able to pay back their loans, तो उनका exchange rate depress हो जाएगा, मतलब depreciate हो जाएगा. Then comes the political stability. ठीक है, foreign investors are attracted to invest in countries displaying a lower propensity of political turmoil. Foreign investor किस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? ठीक है, जिस कंट्री में कम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, जहाँ पे जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो वो स्टेबल हो, ठीक है. तो अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमारा स्टेबल होगा, ठीक है, इट विल लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. Any doubt in public debt and political stability?
Any doubt in these two factors? Okay, then we'll move forward. Then comes the economic recession. अब economic recession, किसी भी इकोनॉमी में जब recession आता है तो क्या होता है, उसके इंटरेस्ट रेट फॉल करते हैं. ठीक है, अब जब हमने डिस्कस करा था इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा तो करेंसी क्या होगी, डिप्रिशिएट होगी. हमने अभी इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट डिस्कस किया था ना, सेम यहीं पे फॉलो होगा. इंटरेस्ट रेट फॉल इन अ रिसेशन एंड व्हेन दिस हैपन वी सी अ फ्लो ऑफ मनी आउट ऑफ द कंट्री टू कंट्रीज विद द हाई इंटरेस्ट रेट्स. तो क्या अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी. Then comes the current account deficit. Current account deficit कब होता है, when our imports are more than our exports. ये हमने already discuss किया था जब हमने BOP पढ़ा था. ठीक है. So one of the most critical deficit parameter is the current account deficit, which is a difference between a country spending and what is earned. ठीक है, country क्या payments कर रही है and what is it earning. उसका जो difference है causes a current account deficit. A current account deficit means that the country is spending more to buy than what it earns. ठीक है, कि कंपनी जो कंट्री है वो ज्यादा पैसे स्पेंड कर रही है, they are paying more and they are earning less. ठीक है, consequently if foreign currency earning by export are not enough, it will lead to borrow money from abroad to make up the difference. This high demand for a foreign currency lowers the country's exchange rate. ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, अगर मेरी पेमेंट ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, ठीक है, तो अपने फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करने के लिए मुझे फॉरेन में अपनी करेंसी को बाय करना पड़ेगा. ठीक है, और इससे क्या होगा, अगर मेरी पेमेंट्स आर मोर, ठीक है, तो मैं फॉरेन करेंसी की पेमेंट मतलब ज्यादा कर रही हूँ. ठीक है, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मेरा जो एक्सचेंज रेट है कंट्री का, वो लोअर डाउन हो जाएगा. गॉट दिस पॉइंट. Effect of current account deficit on exchange rate is clear to everyone. Okay. Then moving on, there comes the terms of trade. Terms of trade में same वही export import है. Exporting earns a country some money while importing is spending it. ठीक है, जब हम export करते हैं तो हमें क्या होता है, पेमेंट रिसीव होता है. जब हम import करते हैं तो हम पेमेंट हमें करना पड़ता है. ठीक है, if a country exports are growing at a higher rate than its import, it's a good sign for its exchange rate. क्योंकि मेरे को क्या करना पड़ रहा है, एक्सचेंज एक्सपोर्ट में मेरे को पेमेंट मिल रहा है. ठीक है, तो मेरी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी. Higher export means increased demand for the country's currency and therefore its value. Then comes the market sentiment. मार्केट सेंटिमेंट कैसे अफेक्ट करते हैं मेरे एक्सचेंज रेट को, कि जो भी मेरे स्पेकुलेटर्स हैं मार्केट में, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि व्हाट कुड बी द प्राइस ऑफ रुपी इन द फ्यूचर. ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि मार्केट नेगेटिव है फ्यूचर में, तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, अपनी लोकल करेंसी को सेल करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी. सो मार्केट सेंटीमेंट कैसे है, इज इट अ पॉजिटिव सेंटीमेंट और इज इट अ नेगेटिव सेंटीमेंट टुवर्ड्स द करेंसी, वो भी हमारे एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करता है. Then comes the government intervention. Government and central bank have the monetary authority to intervene to stabilize a currency by formulating a trade policy, printing money, or increasing and decreasing a interest rate. अब गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर सकती है, इट कैन इंटरवीन थ्रू by printing money, by printing money, or by increasing or decreasing the interest rate, or by changing the trade policy. ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कहीं सैंक्शंस लगा दिए, बैरियर्स इंक्रीज कर दिए, ठीक है, उससे भी करेंसी के एक्सचेंज रेट पे फर्क आएगा. ठीक है, then comes the stock market. When the domestic stock market rises, investment from foreign investor increases. जब मार्केट बूम होती है, हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट बूम होती है, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर एंटायर इकोनॉमी. तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री. ठीक है, तो अगर वो इन्वेस्ट करेंगे हमारी कंट्री में, तो हमारी करेंसी की डिमांड राइज हो जाएगी. डिमांड राइज होगी तो मेरी करेंसी एप्रिशिएट करेगी. ऑल दिस पॉइंट इज क्लियर, आर क्लियर टू एवरीवन. फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट में किसी को कोई डाउट है?
Anyone has any doubt? Okay, then we'll move forward. ये भी हमने कल डिस्कस किया था, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट एंड हाउ इज ट्रेडिंग इज डन इन स्पॉट मार्केट. ठीक है, हम बस ब्रीफली इसको फिर से गो थ्रू करेंगे. ठीक है, और किसी को कोई डाउट है देन दे कैन राइट इन अ चैट बॉक्स. स्पॉट मार्केट क्या होता है? इन द स्पॉट मार्केट करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर इमीडिएट डिलीवरी. स्पॉट मार्केट का क्या है? मैंने आज ट्रांजैक्शन करी है, T+2 में उसकी सेटलमेंट हो जाएगी. T+2 मतलब 2 बिजनेस डेज में उसकी सेटलमेंट हो जाएगी. दैट इज अ स्पॉट मार्केट. In the spot market, currencies are traded for immediate delivery, typically within 2 business days. Traders exchange currency at a current market rate known as a spot rate. जो current आज की डेट में जो मार्केट में रेट होगा उस पे वो एक्सचेंज करेंगे करेंसी. ठीक है, that is a spot market rate. Then comes the forward rate or a forward market. Forward market क्या होती है? Forward market allows a trader to lock in an exchange rate for the future date. फॉरवर्ड मार्केट में मैं क्या कर रही हूँ? किसी फ्यूचर डेट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए मैं आज के एक्सचेंज रेट लॉक कर रही हूँ. The contracts are made to buy or sell a currency as a predetermined price on a specific future date. एक किसी स्पेसिफिक फ्यूचर डेट का मैंने डेट स्पेसिफाई कर दी होती है कि इस एक्सचेंज, इस प्राइस पे, इस रेट पे मैं आपसे फ्यूचर पे ये करेंसी बाय या सेल करूंगी. ठीक है, जो भी मैंने करेंसी स्पेसिफाई करी होगी उसको बाय एंड सेल करूंगी एट सम फ्यूचर डेट. तो दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड मार्केट. ठीक है, जो अभी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है बट फ्यूचर में जाके ट्रांजैक्शन होगी उसकी. Then comes the spot trading. Spot trading is the in the foreign exchange market involves the exchange of one currency for another with the delivery and payment occurring immediately or within a short time frame. It provides the liquidity and flexibility for the trader. Spot trading क्या है? जो आज की डेट में जो भी मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, that all are स्पॉट ट्रेडिंग. ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग से क्या होता है? स्पॉट ट्रेडिंग प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द ट्रेडर्स. ठीक है, ये भी हमने कल डिस्कस किया था, फिर से हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. कोटेशन, बिड, बिड रेट, आस्क रेट एंड क्रॉस रेट. ठीक है, कोटेशन क्या होता है? एक्सचेंज रेट एट विच वन करेंसी कैन बी बॉट और सोल्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी. इट इज यूजुअली डिस्प्लेड एज अ पेयर ऑफ करेंसी लाइक यूरो पर यूएसडी. ठीक है, ये यूरो पर यूएसडी का रेट है. जैसे बिड रेट क्या होता है? इज अ प्राइस विच फॉरेक्स डीलर इज विलिंग टू पे टू बाय अ करेंसी. ठीक है, बिड रेट इज अ बाइंग रेट. दिस इज द प्राइस एट विच डीलर विल बाय द बेस करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ द कोटेड करेंसी. ठीक है, अब आस्क रेट क्या होता है? आस्क रेट इज द प्राइस इज विलिंग टू सेल अ करेंसी. उल्टा हो गया, आस्क इज अ सेलिंग रेट. This is the price at which the dealer will sell the base currency in exchange for the quoted currency. Clear? Then comes the cross rate. Cross rate भी हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें हम टू करेंसीज में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं जिनका एक्सचेंज रेट अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है, द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज नीदर ऑफ विच इज अ यूएस डॉलर. इट इज ड्राइव बाय कन्वर्टिंग टू करेंसीज टू यूएस डॉलर फर्स्ट, देन कैलकुलेटिंग देयर रेट. लाइक एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यूरो पर डॉलर का रेट है एंड डॉलर पर येन का रेट है. ठीक है, तो इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकती हूँ? यूरो पर येन का रेट निकाल सकती हूँ. सो यूरो पर येन का जो रेट निकलेगा दैट विल बी अ क्रॉस रेट. एनी डाउट इन दीज फोर? ओके, नो वन हैज एनी डाउट? कल के भी किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछ लो. ओके, अगर नहीं किसी को डाउट है देन विल मूव फॉरवर्ड.
देन कम्स दी लॉन्ग एंड शॉर्ट फॉरवर्ड पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, जिसमें मैं अपनी बेस करेंसी को बाय करती हूँ, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, जिसमें मैं अपनी बेस करेंसी को सेल करती हूँ। लॉन्ग पोजीशन इज बाइंग द बेस करेंसी इन द फॉरवर्ड मार्केट एंड शॉर्ट इज सेलिंग द बेस करेंसी इन द फॉरवर्ड मार्केट। अब हेजिंग क्या होती है, हेजिंग भी कल हमने डिस्कस किया था कि ऑफसेटिंग रिस्कलेस पोजीशन होती है, ठीक है। ऑफसेटिंग पोजीशन टू मिटिगेट रिस्क इन अ फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड मार्केट, ट्रेडर कैन ईदर टेक अ शॉर्ट और अ लॉन्ग पोजीशन। या तो जब फॉरवर्ड मार्केट में डीलर्स ट्रेड करते हैं तो दोनों में से एक पोजीशन तो उसको लेनी पड़ेगी, ईदर दे हैव टू बाय अ करेंसी और दे हैव टू सेल अ करेंसी, ठीक है। A long position involves buying the base currency in the forward market, while the short position involves the selling the base currency. This position can be used to hedge against the currency fluctuation and manage exchange rate risk. Then comes the forward premium and forward discount. अगर forward premium क्या होता है, अगर मेरा जो फॉरवर्ड रेट है इन कंपैरिजन टू माय स्पॉट रेट हायर वैल्यू पे है, देन इट इज अ फॉरवर्ड प्रीमियम, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज, ठीक है, और डोमेस्टिक करेंसी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर $1 इन फॉरवर्ड रेट $1 इज इक्वल्स टू 75 रुपीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेरे रुपये की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ माई डोमेस्टिक करेंसी इट इज अ फॉरवर्ड प्रीमियम, ठीक है। और वैल्यू अगर कम होती है $1 इज इक्वल टू 85, देन इट इज अ फॉरवर्ड डिस्काउंट। तो फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट रेट एंड द फॉरवर्ड रेट ऑफ द करेंसी पेयर। इफ द फॉरवर्ड रेट इज हायर देन द स्पॉट रेट, अगर फॉरवर्ड रेट मेरा स्पॉट रेट से ज्यादा होगा, देन इट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड प्रीमियम, इंडिकेटिंग द बेस करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू एप्रिशिएट रिलेटिव टू द कोट करेंसी, ठीक है। Then comes conversely, if the forward rate is lower than the spot rate, it is a forward discount, indicating the base currency is expected to depreciate relative to the quote currency, ठीक है। हम किस रिस्पेक्ट में इसको जज करते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ बेस करेंसी एंड द कोट करेंसी। एनी डाउट इन दिस? Okay. As it is clear to all of you, we'll move forward. Then comes the arbitrage, hedging and speculation. This has been also been discussed in your class. We'll quickly go through it. Arbitrage क्या होता है, simultaneous buying and selling of the currency to profit from a difference in exchange rate across different market, ठीक है। साइमल्टेनियसली मैं करेंसी को बाय भी करती हूँ और एक मार्केट में और एक दूसरी मार्केट में उसको सेल कर देती हूँ। तो जो ये रिस्कलेस प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज। हेजिंग क्या होता है, हेजिंग क्या है, जस्ट मिटिगेटिंग, आई एम मिटिगेटिंग माय रिस्क। Hedging involves taking an offsetting position in foreign exchange market to minimize the risk of adverse currency movement. बस मैं अपने आप को hedging में protect कर रही हूँ from the adverse market movements. Then comes the speculation. Speculation is the act of trading currency with the aim of profiting from speculation, from fluctuation in exchange rate rather than for the commercial purpose. Speculation क्या है, सिर्फ short term gain है कि मैं बस मैंने एक स्पेकुलेट किया कि ये करेंसी का प्राइस ऊपर जा सकता है एंड आई ट्रेडेड ऑन दैट, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पेकुलेशन कैन लीड टू हाई लॉसेस, कि अगर आपका जो भी आपने स्पेकुलेट किया था या फिर कोई भी आपकी जो जजमेंट थी वो अगर गलत हो जाती है तो वो उसमें आपको हाई लॉसेस हो सकते हैं। एनी डाउट इन दिस? Okay, then we move forward to that, which is a to purchasing power parity. Purchasing power parity क्या होता है? It's an economic theory that compares the different currencies through its basket of good. ठीक है, एक basket of goods से हम compare करते हैं currency के exchange rate को.
Under a triple P theory, it is the exchange rate at which one nation's currency would be converted into the another to purchase the same amount of goods और अ बास्केट ऑफ गुड्स. ठीक है. एक्सचेंज रेट क्या है? सिर्फ डिफरेंस है कि एक बास्केट ऑफ गुड को मैं दोनों करेंसी में किस किस अमाउंट पे खरीद सकती हूँ. ठीक है. इज जस्ट दैट डिफरेंस. पीपीपी ट्रिपल पी अलाउ इकोनॉमिस्ट टू कंपेयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन द कंट्रीज. सम कंट्री एडजस्ट देयर जीडीपी फिगर्स टू रिफ्लेक्ट ट्रिपल पी. Some feel that the PPPP does not reflect reality due to the difference in local taste, taxes, tariffs, and competition. तो ट्रिपल पी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ट्रिपल पी में एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? हेयर एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी 1 टू करेंसी 2 इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड x in currency 1 divided by the cost of good of x in currency 2. Is purchasing power parity is clear to everyone? Okay. आगे बढ़ते हैं. then comes the interest rate parity. अब interest rate parity क्या बताती है? It explains the relationship between the exchange rate and the interest rate of two countries. ठीक है. According to the theory, the forward exchange rate should be equal to the spot exchange rate times the interest rate of the home country divided by the interest rate of the foreign country. ठीक है. कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? spot rate multiplied by the interest rate of the home country divided by the interest rate of the foreign country. That is our forward exchange rate. ठीक है. अगर IRP होल्ड नहीं करता, then there is a possibility to earn a profit by arbitrage strategy. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द IRP रिलेशनशिप, द अमाउंट यू एक्सचेंज एट द स्पॉट रेट, अगर मैंने स्पॉट मार्केट में कोई अमाउंट एक्सचेंज किया है इन फॉरेन करेंसी और उसको इन्वेस्ट कर दिया फॉरेन इंटरेस्ट रेट में, देन उसको फ्यूचर डेट में फिर से एक्सचेंज किया, देन एक्सचेंज एट द फ्यूचर डेट शुड बी इक्वल टू द सिंपली इन्वेस्टिंग इन द होम करेंसी इंटरेस्ट रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम. क्या बोल रहा है वो? अगर मैं स्पॉट मार्केट में मैंने किसी फंड को इन्वेस्ट किया, स्पॉट मार्केट में कन्वर्ट किया फंड्स को, ठीक है, उसको फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, जहां पे मेरे को क्या मिलेगा? फॉरेन इंटरेस्ट रेट मिलेगा. देन सम फ्यूचर डेट में मैंने उसको वापस कन्वर्ट किया, ठीक है, तो वो इसका क्या, वो जो अमाउंट है इट इज इक्वल कि मैं जब अपनी डोमेस्टिक मार्केट में ही इन्वेस्ट करती. ठीक है. दैट इज द आइडिया बिहाइंड द इंटरेस्ट रेट पैरिटी. अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड करती है तो अगर मैं फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट कर दूं अपनी करेंसी कन्वर्ट करके, और अगर मैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी में इन्वेस्ट करूं तो उसमें सेम मेरे को इंटरेस्ट रेट मिलेगा. The idea behind the IRP theory is that if the currency are in equilibrium, then they should not be able to earn profit from just exchanging the currencies. Is interest rate parity is clear to everyone? Any doubt in purchasing power parity and interest rate parity? Any doubt, anyone? सबको समझ आ गया इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड परचेसिंग पावर पैरिटी? ठीक है. ओके. फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, विच इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया था. इट्स अ मोड ऑफ एंट्री. ठीक है. It's a crucial strategy for the firm seeking to expand their global footprint and establish a long-term presence in key market. It involves substantial investment in acquiring ownership of the productive assets like land, labor, capital, technology, and equipment to establish a physical presence abroad. ठीक है. FDI का क्या मतलब है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसमें मैं किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी में, ठीक है,
बहुत ही सब्सटैंशियल अमाउंट इन्वेस्ट करती हूँ जिससे मेरे को उसकी ओनरशिप मिल जाती है. इट मीन्स आई एम इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी ऑफ दैट कंपनी. ठीक है. इससे क्या होगा, मेरी जो कंपनी है, एज आई एम द ओनर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है, परसेंटेज ओनर होंगी मैं उस कंपनी की, तो मेरी क्या होगी, ग्लोबल प्रेजेंस होगी. ठीक है. एंड दैट प्रेजेंस विल बी अ लॉन्ग टर्म. जब तक मैं अपने शेयर सेल आउट नहीं कर दूंगी, टिल दैट टाइम मेरी प्रेजेंस वहां पे होगी. ठीक है. वहां पे मेरे को मेरा प्रॉपर स्टेक होगा कंपनी में. ठीक है. Then comes the FDI is a riskier but more committed approach compared to the other entry strategies. क्योंकि FDI एक long term strategy है, तो it is a more committed approach, क्योंकि you are now becoming the owner of that company. अगर आप किसी कंपनी के ओनर हो, then you will be involved in its day to day activities. कि क्या क्या हो रहा है वहां पे, what are the factors affecting the profitability of your firm, आप सब चीजों का ध्यान रखोगे. ठीक है. तो ये बहुत ही कमिटेड अप्रोच है. यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन इट एवरी टाइम. Then comes what is the advantage of FDI? FDI helps in the transfer of technology. First, FDI help host country gain access to a superior technology brought in by the foreign firms, fostering the innovation and economic growth. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन हो गया कि अगर होस्ट कंट्री में कुछ किस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, इट विल कम फ्रॉम द होम कंट्री ऑफ द इन्वेस्टर्स. ठीक है. That will help in the innovation and the economic growth. Then comes the increased competition. FDI leads to increased output, reduced domestic prices, improved quality and greater availability of products and services, enhancing consumer welfare. क्या होगा, अगर मैं फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो वहां पे बाय माई इन्वेस्टमेंट, वहां पे हम क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाएंगे. ठीक है. बिकॉज दे आर गेटिंग द फंड फॉर इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी, फॉर एक्सपैंडिंग देयर ऑपरेशंस. ठीक है. अगर ऑपरेशंस एक्सपेंड करेंगे, अपनी ऑपरेशन कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे, देन देयर विल बी द ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अल्टीमेटली एनहांसिंग द कंज्यूमर वेलफेयर. FDI leads to capital inflows. Capital inflows in the form of the FDI increasing the domestic investment, enabling the countries to effectively respond to increased competition and bridge foreign exchange gap. क्या कर रहे हैं हम इसमें, अगर हम अगर फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, इट विल इंक्रीज कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट. ठीक है. और क्या होगा, इससे मोर कैपिटल फ्लो इन करेगी. ठीक है. which help ultimately helps to lower the gap between the exchange rate of the countries. Then comes the limitation of FDI. Limitation में क्या है, first is a monopolistic tendency. Multinational enterprises operate at very large level and have more power compared to the domestic enterprises. अगर कोई किसी foreign country में invest करने जा रहा है, then it means it is a multinational company. ठीक है. क्योंकि उसने अपनी लोकल मार्केट में जो भी अवेलेबिलिटी होगी, जो भी अपॉर्चुनिटीज होगी, वो सब एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, देन इट विल मूव टू अ फॉरेन मार्केट. ठीक है. सो अगर वो फॉरेन मार्केट में स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है, देन इट हैज अ मोर पावर इन कंपैरिजन टू द डोमेस्टिक मार्केट देयर. ठीक है. दिस क्रिएट्स द मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस मोनोपोलीज इन सर्टेन सेक्टर्स, इंपेडिंग द एंट्री ऑफ न्यू डोमेस्टिक फर्म्स. ठीक है. इससे क्या होता है, अगर वहां पे वो बहुत ही लार्ज साइज कंपनी बन जाती है, देन इट विल बी द मोनोपोलिस्टिक कंपनी. ठीक है. मोनोपोलिस्टिक इंडस्ट्री, जिससे जो न्यू फर्म्स हैं, न्यू स्टार्टअप्स हैं, इट बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टैब्लिश और एंटर इन दैट मार्केट. Then comes the crowding out effect. FDI tends to discourage entry and stimulate exit of domestic entrepreneurs, often terms as a crowding out effect. ठीक है. इसमें क्या है कि FDI अगर आती है, ठीक है, if some country is getting a foreign direct investment, उससे क्या होता है, जो हमारे डोमेस्टिक entrepreneurs हैं, उनके लिए it become tough to enter into the market, क्योंकि now you are having a big players in the market. As the FDI enterprises are less labor intensive, their entry can lead to higher unemployment and increased social instability. अगर कोई किसी सेक्टर में FDI आई है, they are because they are getting a fund from the outside, they are now are more capital rich. तो क्या होगा, अगर वो capital rich है, they will be able to have more innovative technique to manufacture their products. तो उससे क्या होगा, there will be a less labor incentive. अगर लेबर इंसेंटिव कम हो जाएंगे कंपनीज, तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा.
because they are not hiring more labor to do their factory work. Then comes the strategic risk. FDI exposes the country company to the host country's political and economic risk, with MNEs holding a dominant position in sensitive industries like telecommunication and IT. There is a danger that the strategic interest of the host country may be compromised. ठीक है, जैसे अब स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या है, क्योंकि एमएनई इज अ लार्ज कंपनीज, ठीक है, तो वो डोमिनेंट बन जाती है मार्केट में, एंड दे होल्ड द सेंसिटिव सेक्टर्स ऑफ द होस्ट कंट्री, ठीक है, which is a dangerous situation for the host country, because the foreigners or the foreign they have a foreign ownership in their big market players, ठीक है, जो उनकी वर्किंग में भी इंटरफेयर कर सकते हैं. Then because this leads to the strategic risk. Any doubt in FDI? FDI is clear to everyone? अनुराग, स्ट्रैटेजिक रिस्क है. स्ट्रैटेजिक रिस्क में क्या है, अगर मेरी कंट्री में, ठीक है, एफडीआई आ रही है, ठीक है, एफडीआई मतलब कोई सब्सटैंशियल अमाउंट आ रहा है किसी भी सेक्टर में, एंड अगर वो सब्सटैंशियल अमाउंट किसी भी सेंसिटिव सेक्टर में आ रहा है, सेंसिटिव सेक्टर का मतलब क्या है, सेक्टर विच इज इम्पोर्टेंट फॉर माई इकोनॉमी, ठीक है, अगर वहां पे एफडीआई आ रहा है, इट मीन्स उसका जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो गई है, नाउ इट्स ओन बाय द फॉरेन प्लेयर्स, ठीक है. अगर वो फॉरेन प्लेयर्स ओन कर रहे हैं, देन देयर विल बी अ कंडीशन और देयर विल बी अ सिचुएशन जब वहां पे वो जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं या फिर लोकल ओनर्स हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वहां पे उसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है. दे विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द लोकल ओनर्स, ठीक है, जिसकी वजह से देयर इज अ स्ट्रैटेजिक रिस्क, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस. अनुराग, नाउ इट इज क्लियर टू यू? ओके. Then we'll move to a greenfield investments. Greenfield investment क्या होता है? As the name suggests, greenfield investment क्या है? There is an empty plot you are buying. ठीक है, then you are building a new manufacturing unit over it. क्या आप बिल्कुल ही scratch से start कर रहे हो? Greenfield investment में क्या है? You are investing in from scratch. ठीक है, आपने क्या किया ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में? इट इन्वॉल्व्स ऑफ बाइंग अ एम्प्टी प्लॉट ऑफ लैंड, देन बिल्डिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी फॉर द इन्वेस्टिंग फर्म ओन यूज, ठीक है. कोई वहां पे आप फर्म स्टैब्लिश कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपने फ्रॉम दी स्क्रैच इन्वेस्टमेंट करी है. What is the advantages of greenfield investment? It allows the firm to build the kind of subsidy they want. ठीक है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या फायदा होगा? जैसे अगर मैं कोई कंपनी हूँ इंडिया की, ठीक है, और मेरे को बाहर कोई फैसिलिटी स्टैब्लिश करनी है, ठीक है, अगर आई एम स्टैब्लिशिंग दैट फैसिलिटी फ्रॉम द स्क्रैच, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से उसको बना सकती हूँ. आई कैन मेक इट हाउ आई वांटेड. Establishing operating routines from scratch, availing incentives and concession from the host countries and yield a greater long-term returns. ठीक है, because मैं अपनी मर्जी से उसको डिजाइन कर सकती हूँ. Then the host country will provide me some concession for establishing a unit outside India, outside a home country. Then what is the limitation? Greenfield ventures are slower to establish and riskier due to the uncertainty in future revenue and profits. अगर सोचो मैं किसी चीज में स्क्रैच से इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, इट मींस इट इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एंड अगर वो इंडस्ट्री उस सेक्टर में या फिर उस कंट्री में नहीं चली, देन देयर इज अ रिस्क कि मेरे को कुछ भी प्रॉफिट ना हो उस इंडस्ट्री से, ठीक है. So there is a riskier due to the uncertainty in future revenue and the profits, and they can be preempted by the more aggressive global competitors. और वहाँ के जो भी लोकल और डोमेस्टिक प्लेयर्स होंगे वो भी मेरे there are my great competitors, ठीक है. अगर वो उनको पता चलेगा कि आई एम स्टैब्लिशिंग माई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देयर, दे विल बी मोर एक्टिव एंड वो प्रोएक्टिव मेजर्स लेके दे विल compete with me. Any doubt in greenfield investments?
Okay, then we'll move forward. Next is a mergers and acquisitions. अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं acquisition का मतलब क्या होता है. Acquisition involves purchasing an existing firm in the target market. ठीक है, मैं किसी existing firm को purchase कर रही हूँ. ठीक है, this is a acquisition. ठीक है, such as Home Depot acquiring the stores and assets of Home Mart in Mexico. ठीक है, मैंने किसी existing firm को acquire कर लिया. Then comes the mergers. A merger is a special kind of acquisition where two separate entities combine to form a new organization. Merger क्या मतलब है? एक्विजिशन में क्या किया था, मैंने एक दूसरी फर्म को एक्वायर कर लिया था. जैसे ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है, ए ने बी को एक्वायर कर लिया, तो क्या हो जाएगा, कंपनी का नेम क्या रहेगा, ए रहेगा. ठीक है, बट इन केस ऑफ अ मर्जर, मर्जर में टू आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ वन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, A plus B is equal to a C. That is the new organization. A merger is a special kind of acquisition where two separate entities combine to form a new joint organization, generating positive outcome like a lowered cost, increased economies of scale, and greater market power. That is the merger. Recent M&A deals include Rosneft acquiring Esser Oil, etc. Esser Oil Limited, Ola acquiring Food Panda, Oyo acquiring Weddings.n, and a Walt Disney merger with the 21st Century Fox Incorporation. These are some of the examples of the recent M&A deals. Any doubt in merger and acquisition? Yes, like voter an idea. Satya Prakash, do you have any doubt? Any other doubt, anyone? Or I move forward? Shreya, what are you asking? You are asking a recent M&A deal. Okay. So recently there could be an example of Capital One merging with the Discovery Financial Services, because there are a lot of mergers happening on a daily basis or a monthly basis. There could be a lot of example. Do you guys know any popular merger done in recent time? Guys, do you remember any recent merger which could be cited as an example here? Yes, Akash and Byju's. And Tata Sons acquired Air India.
Any other example, guys? Another could be the merger of Zomato and Blinkit. Shreya, do you want more example on this, or can I continue further? Okay. So moving on, what are the advantages of acquisition? First is the existing asset. Other multinational companies are acquiring some other company, ठीक है? तो जो भी दूसरी कंपनी के जो भी assets होंगे, जो भी intangible assets होंगे, वो जो भी acquiring firm है उसके पास आ जाएंगे, ठीक है? Multinational company gain ownership of the existing tangible and the intangible assets like plant, equipments, HR by acquiring the existing company, ठीक है? So इससे क्या होगा? Synergy effect create हो जाएगा. Then comes the access to networks. The investing firm gains access to existing suppliers and customers of the acquired company. ठीक है, उसके जो भी suppliers होंगे, जो भी उसके customers होंगे, then it will be shifted to the acquiring firm. Then skill and expertise. The investing firm also acquires technical know-how, processes, management skills that lead to the operational efficiency. ठीक है, अगर मैं दूसरी किसी फर्म को एक्वायर कर रही हूँ तो वहां का जो भी स्टाफ होगा, वहां के जो भी उनके स्किल्स होगी, वो मेरी फर्म में एड ऑन हो जाएगी. Then comes the immediate revenue. Acquisition provides an immediate source of revenue and accelerate the return on investments. ठीक है, these are the advantage of acquisitions. Then moving on to the wholly owned subsidiaries. What are these? In this, there is a full ownership. A wholly owned subsidiary is a business entity in which a foreign direct investment assume 100% ownership. ठीक है, wholly owned subsidiary का क्या मतलब है? There will be the 100% ownership and secures the complete managerial control over its operations. ठीक है, जैसे मैं इंडिया की कोई कंपनी हूँ, मैंने दुबई में कोई कंपनी स्टैब्लिश करी जिसकी 100% ओनरशिप इज विद मी, ठीक है, दैट विल बी माय होली ओन्ड सब्सिडरी. In this, control and coordination for the wholly owned subsidiary allows firm to exert complete control over their operations in a different country, which is necessary for the global strategic coordination. Then profit sharing. Establishing a wholly owned subsidiary gives the firm 100% share in the profit generated in the foreign market. क्योंकि मेरा 100% control है, मेरी 100% ownership है, then whole profit will go to me only. Then there is a high investment. A wholly owned subsidiary requires a high capital investment क्योंकि मैं because I am the 100% owner of the company, तो जितनी भी उसमें capital investment होनी होगी, I have to do it, as the investing firm has to bear the full cost and risk of setting up the overseas operations. Any doubt in this? Any doubt? Anyone? Okay, moving on. What are joint ventures? Joint ventures में क्या होता है? What are the first advantages of joint ventures? क्या advantage होती है joint venture में? Joint ventures is I'm coming together with another firm to do some project. It's a joint venture.
तो जॉइंट वेंचर में क्या है, इट इज अ लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम सिर्फ वी आर कमिंग टुगेदर फॉर सम प्रोजेक्ट. जॉइंट वेंचर्स रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू द होली ओन सब्सिडीज. ठीक है, ये जैसे कि होली ओन सब्सिडी में क्या था, आई एम हैविंग अ 100% स्टेक इन दैट. ठीक है, अब जॉइंट वेंचर में क्या है, आई विल डिसाइड कि मैं 50% इन्वेस्ट करूंगी एंड किसी फॉरेन इन्वेस्टर को या फिर उस फॉरेन मार्केट के कोई लोकल इन्वेस्टर को आई फाउंड आउट एंड आई से दैट यू इन्वेस्ट 50% ऑफ द मनी. ठीक है, तो 50-50% की ओनरशिप हो गई, इट्स अ जॉइंट वेंचर. ठीक है, लोअर इन्वेस्टमेंट होगी क्योंकि मेरी अब होली ऑन सब्सिडी से तो कम ही इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज नाउ आई एम स्पेंडिंग ओनली 50% ऑफ द अमाउंट. Second is the local knowledge. Collaborating with a local partner enhances the foreign entrant's ability to gain the knowledge of the competitive conditions. अगर वहां पे मैंने फॉरेन मार्केट में किसी वहां के डोमेस्टिक पार्टनर के साथ कोलैबोरेट किया है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे को वहां की लोकल नॉलेज मिलना विल बी इजियर. ठीक है, और क्योंकि वहां का जो डोमेस्टिक प्लेयर होगा, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मार्केट, सो इट विल हेल्प इन माय formulating of my strategies. Then comes the resource sharing. Joint venture give access to other resources and strength of the partner, such as the technology, market know-how, and the skills. अगर there is a joint venture, then they will be sharing their resources. तो जिसके भी better resources होंगे, it will add to their profitability. Then there is a risk reduction. Joint venture reduces the operating and the political risk for the investing firm. Operating risk कैसे हो गया, क्योंकि now they will be able to better understand their local markets in which they are trying to operate in the foreign country. ठीक है, और political risk कैसे कम हो गया, because now they have a domestic partner from the foreign country. So जो local know-how समझता होगा, local जो भी rules होंगे, regulations होंगे, वो सब उनको समझ आती होगी. So they are better able to manage their operations. Any doubt in this? Any doubt in joint ventures? Okay. Moving on, we'll discuss a vertical and a horizontal integration. A vertical integration क्या होता है? It is an arrangement whereby the firm owns or seek to own a multiple stages of value chain for producing, selling and delivering a product or services. ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है? आई एम जो भी मेरे सप्लायर्स हैं, मैंने उनके साथ इंटीग्रेट कर लिया है. ठीक है, दैट इज अ वर्टिकल इंटीग्रेशन. For example, Samsung Electronic acquired QuickSight Corporation, a leading distributors of air conditioner in Northern America, to enhance its ability to distribute its own air conditioner. ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेशन तुम्हारी कंज्यूमर साइड पे भी हो सकता है, तुम्हारे सप्लायर साइड पे भी हो सकता है. इट्स अ वर्टिकल इंटीग्रेशन. ठीक है, what is vertical integration clear to everyone? Okay, then is the horizontal integration. Horizontal integration is an arrangement in which firm owns or seek to own the activities performed in a single stage of its value chain. For example, Samsung acquired the manufacturing plant of Emica, a home appliance company in Poland, to expand its production capacity in its core business. That is a horizontal integration. Horizontal integration क्या है? You are expanding your business capacity. ठीक है, इसमें क्या कर रहे हो आप? अपनी जो आप करेंटली प्रोडक्शन कर रहे हो उसको इंक्रीज कर रहे हो. यू आर एक्सपैंडिंग योर विंग्स, यू आर जस्ट डाइवर्सिफाइंग. ठीक है, आप डाइवर्सिफाइंग टू डिफरेंट लोकेशंस. ठीक है, आपने कहीं और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी सेटअप कर दी है. ठीक है, अपनी फैक्ट्री कहीं और सेटअप कर रही है. दैट इज द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. वहां की कोई लोकल कंपनी के साथ आपने टाई अप किया और वहां पे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी स्टैब्लिश कर दी. दैट इज अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या है? यू आर मूविंग अप एंड डाउन ऑन योर सप्लाई चेन. या तो आप अपने सप्लायर्स से इंटीग्रेट कर रहे हो, या फिर आप आपके कंज्यूमर से, या फिर आपके जो होलसेलर्स है उनके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो. दैट इज अ वर्टिकल इंटीग्रेशन. एनी डाउट इन दिस?
Okay. Moving on. What could be the other form of international investment? There could be a foreign portfolio investment. Foreign portfolio investment में क्या होता है? Foreign portfolio investment is a form of international investment that seek to acquire ownership of an enterprise in a foreign country by acquiring ownership of the securities, which in turn generate financial return. अब foreign portfolio investment क्या है? कि I am just investing in their equities. ठीक है, और वो भी only a short sum. I mean, in this I'm investing a very little amount, not like a FDI जिसमें मैं एक major chunk of investment करती हूँ. Foreign portfolio investment is like a buying a stock of that company. That is very to a little, very little amount. Then comes the international strategic alliance. And international strategic alliance or international collaborative venture is a cross-border business alliance in which a local firm for a local firm collaborate with one or more firm to pursue a joint project or initiative without creating a new legal entity. Strategic alliance में क्या है? जैसे दो companies, एक domestic company हो गई, एक foreign companies हो गई, they are just coming together for a some project. ठीक है? That is a strategic alliance. ठीक है? Then comes the joint venture. We have already discussed the joint venture. It's a collaboration where two or more firms collaborate to create a newly joint enterprise. Partner in a joint venture may enjoy the minority, equal, or the majority ownership. These three types are clear to everyone. Okay. Then comes the outsourcing. Outsourcing क्या है? Outsourcing, as the name suggests, कि मैं किसी को outsource कर रही हूँ अपना काम. ठीक है? किसी और को delegate कर रही हूँ. Outsourcing is a strategic business practices where business procure value-adding services, including production of goods and services from external independent supplier. ठीक है? By outsourcing, firm can focus on their core competencies by delegating non-critical risk to a specialized providers. क्या करते हैं outsourcing में हम? मैं अगर एक कंपनी हूँ, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई कोर बिजनेस, और जो भी साइड एक्टिविटीज हैं वो मैंने किसी और आउटसाइड पार्टी को आउटसोर्स कर दिए, डेलीकेट कर दिए. ठीक है? विच आर अवेलेबल एट अ लो कॉस्ट. ठीक है? दिस अप्रोच हैज बिकम अ कोर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटजीज, enabling a company to achieve cost efficiency, access global talent pools, and enhance their overall competitive advantage. ठीक है? That is the basic meaning of outsourcing. This is the in this I am leveraging external resources. What is the meaning of leveraging external resources? That I am using my external resources at a low cost for my advantage. तो outsourcing में first is the business process outsourcing. It could be the back office exercises or the front office activities. Back office BPOs क्या होते हैं? It involves outsourcing internal upstream business functions like payroll, billing, and accounting. These tasks are typically not customer facing and are often outsourced to reduce operational cost and improve efficiency. जो भी मेरी back office की activities है, अगर मैं उनको outsource कर देती हूँ, that is called the back office BPO. ठीक है? बैक ऑफिस एक्टिविटीज में मेरी क्या आ गया? अकाउंटिंग आ गई, बिलिंग आ गई. ये सब एक्टिविटीज अगर मैंने किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दी है, then it is a back office BPO. Then comes the front office BPO. It refers to outsourcing downstream customer related services like marketing, technical support, and the customer service. ठीक है? फ्रंट ऑफिस में क्या है? जहां पे मेरा डायरेक्ट कस्टमर कम्युनिकेशन है, वो एक्टिविटीज अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को डेलीगेट कर रही हूँ, आउटसोर्स कर रही हूँ, then it is the front office BPO. Any doubt in outsourcing and BPO? Okay, then we'll move forward. What could be the factors which influences the outsourcing decision? First is the cost saving. Company outsource to avail lower operational and labor cost, which
can significantly impact revenue recognition and deliver substantial saving. ठीक है, मैं कब आउटसोर्स करूंगी? जब मेरे को वो एक्टिविटी एट लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल होगी, देन ओनली आई विल आउटसोर्स माय एक्टिविटी. ठीक है, अगर महंगी होगी देन देयर इज नो सेंस इन आउटसोर्सिंग इट. टू फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज. आउटसोर्सिंग से क्या होता है? बिजनेसेस आर एबल टू focus on their core business process while delegating a non-critical and time-consuming task to external agencies. Third is access to global knowledge and resources. Outsourcing enable companies to tap into global knowledge base and leverage a world-class capabilities and resources not available internally. ठीक है, outsource करने से क्या होगा? I am able to gain the knowledge base of the outside entity. ठीक है, Abhishek, my slide is not visible to you, or my slides are not visible to everyone? किसी को भी नहीं दिख रही है? So I'll share it again. Wait. Is it visible now? Okay. Last कौन सी slide तक you will be able to watch? Okay. Then we did BPO, जिसमें back office activities होती है and front office activities होती है. This I already explained. Then moving on, we have now we were discussing factor influencing outsourcing decision. Okay, I explain it again. BPO में क्या है? I'm outsourcing my some business activities. ठीक है, अब business activities could be a back office activities जिसमें मेरे payroll, billing and accounting आता है. ठीक है, these are the non customer facing activities. ठीक है, अगर मैं ये activities को outsource करती हूँ then it's a back office BPO. Front office activities क्या होती हैं? जिसमें मेरे customer dealing आती है, like marketing, technical support and the customer service. If I'm outsourcing these activities, then it is a front office BPO. Shreya, now is it clear to you? Okay, moving on. We were discussing the factor influencing the outsourcing decision. First is cost saving. मैं अपनी किसी भी business activity को कब outsource करूंगी? When it is available at a low cost. ठीक है, if it is available at a higher cost तो इसको मैं internally process कर लूंगी. I want outsource it. ठीक है, first will be the cost saving. Then second is focus on core competency. Why I am outsourcing my activities? So that मैं अपने core business activity को पे focus कर सकूं and अपनी जो time consuming and critical non critical activities है उनको outsource करके अपना time save कर सकूं. Then third is access to global knowledge and resources. If I'm outsourcing my work, my business activity to third company, तो वहां पे जो भी expertise available होगी, it will add to my activities. ठीक है. Then last is a risk mitigation. By outsourcing, company can mitigate risk associated with managing complex or the known core functions while still realizing it benefit. ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग दैट एक्टिविटी, मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया है, तो उससे जो भी रिस्क रिलेटेड है नाउ इट डजंट पर्टेन्स टू मी. ठीक है, और मेरा काम भी हो रहा है बिकॉज आई आउटसोर्स दैट एक्टिविटी, मेरा काम भी हो जाएगा एंड आई एम नॉट टेकिंग द रिस्क इन्वॉल्व विद इट.
Then moving on, what are the advantages of outsourcing? We have already discussed the cost reduction. Then there is a organization overall. Overall, by achieving the cost efficiency, outsourcing act as a catalyst to overall organization process and company's operation, driving the further improvement. ठीक है, आउटसोर्सिंग से मेरी बिजनेस इंप्रूवमेंट होगी. देन द स्ट्रेटेजिक फोकस, क्योंकि नाउ कंपनी इज एबल टू फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस एक्टिविटीज, सो दे आर एबल टू अचीव देयर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड objectives. Then there is a fourth is a faster growth. By leveraging external resources and expertise, outsourcing leads to faster corporate growth and expansion into the new market. Moving on to what are the limitation of outsourcing. Limitation में क्या है? Limitation could be that it could be a complex transaction. अगर मेरी बहुत सारी business activities हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को outsource कर दी है, then it will difficult for me to coordinate with all of them. International transaction can be more complex and costly than anticipated. ठीक है, अगर outsourcing is happening at the international level, ठीक है, तो मेरा coordination और tough हो जाएगा. There could be a cultural differences in nation and organizational culture may lead to a conflict and misunderstanding. ठीक है, सेम अगर मेरे जो भी आउटसोर्स कंपनी है, इट्स इन फॉरेन कंपनी, तो देयर कुड बी अ डिफरेंसेस इन द नेशनल एंड द कल्चर फॉलोड बाय द कंपनीज. देन कम्स द एनवायरमेंटल challenges. Firm may face a currency fluctuation, trade barriers and adverse market macroeconomic events. ठीक है, एनवायरमेंटल चैलेंज हो सकते हैं, उसको रेगुलेटरी इश्यूज हो सकते हैं. रेगुलेटरी में दे कुड बी अ पॉलिटिकल इश्यूज, अगर कोई भी गाइडलाइंस या रूल्स चेंज हो सकते होते हैं. इफ देयर इज अ चेंज इन अ टैक्स सिस्टम और द बिजनेस रेगुलेशन, ठीक है, इट कुड अफेक्ट माय आउटसोर्स्ड एक्टिविटी. Then the supplier reliability. Unreliable supplier may prioritize other clients and lead to a disruption in supply chain. ठीक है, अगर मेरा जो क्लाइंट है जिसको मैंने आउटसोर्स करी है अपनी एक्टिविटी, इफ इट्स नॉट फोकसिंग ऑन माय कंपनी, देन इट कुड अफेक्ट माय कंपनी एडवर्सली. ठीक है, क्योंकि इट में द अदर कंपनी, द कंपनी विच आर डूइंग माय आउटसोर्स्ड वर्क, वो किसी और कस्टमर को प्रायोरिटाइज कर रही है, और मेरे कंपनी का काम इट्स नॉट डूइंग एट द राइट टाइम. ठीक है, तो मेरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी. देन कम्स द लॉस ऑफ कंट्रोल. ओवर रिलायंस ऑन सप्लायर कैन रिड्यूस द फॉर्म कंट्रोल ओवर द वैल्यू चेन टास्क. ठीक है, अगर मैं अपनी सारी एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर दूंगी, इवन अ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, तो मेरा पूरा सप्लाई चेन पे कंट्रोल नहीं होगा, बिकॉज आई एम डिपेंडेंट ऑन देम फॉर माई वर्क. Then there is the intellectual property risk. Sharing an intellectual property and business process knowledge may create a future rivals. क्योंकि if I'm outsourcing my activity, I have to share my business knowledge with them, जिससे मेरे को future में कुछ भी दिक्कत आ सकती है, and it could benefit in information leakage अगर कुछ होता है, तो उससे मेरे competitors को benefit हो जाएगा. Any doubt in outsourcing? Any doubt, anyone? Okay. Then comes the outsourcing and the job loss. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब में क्या जॉब लॉस है? आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज टू कंट्रीज विद अ लो लेबर कॉस्ट लेड टू अ जॉब लॉस इन द होम कंट्री. अगर मैं किसी लो लेबर कॉस्ट कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को आउटसोर्स कर देती हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरी जो डोमेस्टिक कंट्री में जो मैंने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया था लेबर्स को, इट विल बी लॉस्ट. ठीक है, then it could be a IT and technical jobs, outsourcing IT services and technical support to countries with abundant skilled labor has impacted the employment. Again, अगर मैं IT और technical services outsource कर देती हूँ, तो उस पे भी मेरा impact होगा. Then comes the professional services. Outsourcing professional services like accounting, legal, consulting also lead to a job loss in the home country. So कुछ सी भी फील्ड में अगर मैं आउटसोर्स कर रही हूँ, इट इज लीडिंग टू अ जॉब लॉस इन माय होम कंट्री.
Then comes the strategies for effective outsourcing. First is a supplier selection. तो कैसे सप्लायर सिलेक्शन करना है मुझे? केयरफुली इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट रिलायबल सप्लायर विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक क्वालिटी, कॉस्ट एंड कल्चरल कंपैटिबिलिटी. सबसे पहले आउटसोर्स करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस फर्म को भी मैं आउटसोर्स कर रही हूँ अपनी एक्टिविटी, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा. हाउ दे वर वर्किंग, कैसे वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे थे, क्या उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट है नहीं है, क्या उनकी कॉस्टिंग थी, एंड ये आर दे कल्चरली कंपैटिबल विद माय फर्म. ये सब चेक करके देन आई विल outsource my activity to that firm. Second is a supply chain management. Implement robust supply chain management practices to ensure a efficient combination and monitoring of outsource activity. क्या करना है? मेरे को एक रोबस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एडॉप्ट करनी है जिससे कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो. जो मेरी फर्म है एंड जो भी आउटसोर्स एक्टिविटी है, किसी भी दूसरी फर्म को जो मैंने करी है आउटसोर्स एक्टिविटी, उसके साथ कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए. एंड देयर शुड बी इफेक्टिव and efficient coordination, communication and the monitoring. Then third is the risk mitigation. Develop the contingency and risk mitigation strategies to address the potential disruption like supplier failure and geopolitical events. ठीक है, risk mitigation में क्या है? I am formulating a strategy जिससे अगर फ्यूचर में by chance, ठीक है, कोई भी अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो अगर होता है तो how my company is going to react to it. ठीक है. Then comes the intellectual property protection. उस केस में हम क्या कर सकते हैं? Implement the measures to protect intellectual property and sensitive business information when outsourced to external party. ठीक है, हम क्या करेंगे? हम एक प्रॉपर मेजर्स या फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, अग्रीमेंट साइन करेंगे कि these are the confidential information and this should not be lead to our competitors. So these are the ways by which effective outsourcing can be done. Then comes the future of outsourcing. In the future of outsourcing, there is first is technological advancement. Advancement in technology such as automation and artificial intelligence are expected to reshape the outsourcing landscape, potentially reducing the need for outsourcing certain tasks. ठीक है, आउटसोर्सिंग में कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा कि अगर मैं अपनी खुद की कंपनी में ही कुछ टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट मशीनरी इंस्टॉल कर दूंगी, देन देयर इज अ नो नीड टू आउटसोर्स दैट एक्टिविटी टू द अदर कंपनी. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आउटसोर्सिंग कम हो जाएगी. Then comes a reshoring and nearshoring. Some countries are considering reshoring and nearshoring their outsourced activities to the location closer to their home country, driven by the factors like rising labor costs, geopolitical tension, and supply chain disruption. Reshoring and nearshoring का क्या मतलब है कि अगर मैंने अपनी कोई एक्टिविटी किसी फॉरेन कंट्री को आउटसोर्स करी है, ठीक है, बट दैट कंट्री इज टू फार फ्रॉम माई कंट्री. ठीक है, बट नाउ आई एम कंसीडरिंग कि अगर मेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में किसी और कंट्री में वही एक्टिविटी एट लोअर कॉस्ट हो सकती है, तो आई विल रिकंसीडर माय डिसीजन एंड मैं क्या करूंगी? मैं उस एक्टिविटी को उस कंट्री में शिफ्ट कर दूंगी. देन इज द एथिकल एंड द सस्टेनेबल आउटसोर्सिंग. There is an increasing focus on ethical and the sustainable outsourcing practices, with companies considering factors like labor rights, environmental factors, social responsibility when selecting outsourcing activities. अब जैसे हमने discuss करा था that countries and even the companies are focusing on a sustainable investing. ठीक है, तो जब भी मैं आउटसोर्स करूंगी आई सी कि जो मेरा पार्टनर है, जो भी मेरा बिजनेस पार्टनर या जो भी फर्म जिसके साथ मैं आउटसोर्स कर रही हूँ अपनी एक्टिविटी, आर दे डूइंग देयर वर्क इन अ सस्टेनेबल मैनर और नॉट. ठीक है, देन कम्स द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. Companies are likely to shift towards more strategic partnership with outsourcing providers, fostering a long-term relationship. इसमें क्या है? I'm not assigning just a business activity to them. I am making them my partner also. ठीक है, तो उससे क्या होगा? There could be a we will be able to establish a long-term relationship with my outsource partner and collaborative approach to drive our innovation and the competitive strategies. In this, we'll work together. कि मैं अपनी कोर एक्टिविटीज पे फोकस कर रही हूँ और जिस एक्टिविटी को मैंने किसी कंपनी को आउटसोर्स किया है उसके साथ में स्ट्रेटेजिकली वर्क कर रही हूँ एज अ पार्टनर एंड वी आर वर्किंग इन कोलैबोरेशन. एनी डाउट इन आउटसोर्सिंग?
Anurag, you're asking outsourcing cost effective होती है? Yes, it could be cost effective exercise अगर वो low cost पे available है. That is just what you have to compare before outsourcing any activity. Any other doubt, anyone? यस, अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो कंपनी आउटसोर्स नहीं करेगी. ठीक है, देयर कुड बी द अदर रीजंस कि कंपनी को अगर आउटसोर्स करना पड़ रहा है कि कंपनी के पास उसके लिए एक्सपर्टीज ही नहीं है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर उस फंक्शन को करने के लिए. इट कुड बी द अदर केस, बट अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है तो कंपनी विल नॉट कंसीडर इट. एनी अदर डाउट, एनीवन? Abhishek will discuss it later on. Okay, moving on. Now, next topic is international business and ecological consideration. This is our last topic for today's class. अब इसमें क्या है? In this today's globalized world, international trade plays a crucial role in promoting sustainable development among the nations. हम जब भी कुछ भी हमने टॉपिक पढ़ा, WTO पढ़ा, IMF पढ़ा, हमने ये क्या पढ़ा था कि now they are focusing on a sustainable growth. कि they are also focusing on a economic growth, but in a sustainable manner. ठीक है. सो नाउ अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा इट शुड बी डन इन अ सस्टेनेबल मैनर. कि हमें अपने आसपास के जो भी हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, एनवायरमेंटल है, सोसाइटी है, उन सबको भी देख के देन वी हैव टू ग्रो. Effective utilization of raw and material, cross-border movement of technology, and eco-friendly products are essential factors contributing to the continuous growth. However, trade and the free trade policy significantly impact the government, necessitating adherence to the basic environmental protection standards. ठीक है. Now we'll discuss it further. So environmental impact of trade policies. ठीक है, ट्रेड पॉलिसीज का क्या क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है? फर्स्ट इज अ पॉल्यूशन हेवंस. A gap in environmental protection standard between the developed and the developing countries may lead to the creation of pollution heavens, where dirty industry relocate to countries with the less stringent regulations and contributing to environmental degradation. पॉल्यूशन हेवन का जैसे हमारे टैक्स हेवन्स होते हैं ना, जहाँ पे टैक्स रेट कम होता है, ऐसी पॉल्यूशन हेवन में क्या है? जैसे जहाँ पे रेगुलेशंस कम होती है. ठीक है, रिलेटेड टू द एमिशन ऑफ पॉल्यूशन. ठीक है, तो इट कुड बी अ गैप बिटवीन अ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री क्या करती है? दे वांट मोर फैक्ट्रीज टू बी एस्टैब्लिश इन देयर एरिया. तो वो अपने जो स्टैंडर्ड है उनको लेस स्ट्रिंजेंट लगती है, लेस स्ट्रिक्ट लगती है, जिससे कंपनीज वहां पे अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को रिलोकेट करते हैं. Then are cascading pollution heavens. The problem of cascading pollution heaven arises when a firm outsources their dirty production process to the other enterprise, creating the illusion of being environmental friendly while indirectly contributing to the pollution. इसमें क्या कर रही है कंपनी? एक कंपनी ने जो भी उसकी pollution related activity है किसी एक सेकेंड कंपनी को ट्रांसफर कर दी है, और उसकी मार्केट इमेज क्या होगी कि दे आर नॉट डूइंग एनी अनफ्रेंडली अनइको फ्रेंडली एक्टिविटी. ठीक है, बट वो एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व है बिकॉज इट हैज आउटसोर्स डर्टी प्रोडक्शन प्रोसेस टू सम अदर कंपनी. दैट इज अ कैस्केडिंग पॉल्यूशन हेवंस. Then it's a positive impact.
On the other hand, some believe that the FDI from the OECD countries can improve environmental standards in host countries by introducing an advanced and a clear technology, bridging the gap between the developed and the developing nations. ठीक है. अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि अब जो एफडीआई हैं वो भी फोकस कर रहे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे. दे कंसीडर्स कि कंपनी अपने सीएसआर एंड ईएसजी एक्टिविटीज में कितना फोकस कर रही है. ठीक है. सो दिस कुड बी अ इम्पैक्ट कि कंपनीज जो हैं, जो फर्म्स हैं, दे विल फोकस ऑन द ईएसजी एक्टिविटीज. ESG is environmental, social, and governance activities, or the CSR activities, which are social, corporate social responsibility activities. उस पर फोकस करेंगी, then they will be able to get more investments. ठीक है. Next is the strategies for the transnational corporations. First is the end of pipe strategy. Transnational corporation may choose an end of pipe strategies focusing on technology that address the waste disposal and a removal of pollutants and designed to eliminate negative environmental effect. ठीक है. इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमारा वेस्ट है उसको हम हाउ टू ट्रीट इट. ठीक है. उसको उसका मेन ट्रीटमेंट्स के हम स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं. Then comes the process and product strategies. Alternatively, they may adopt a strategy oriented on production process and a product aiming to avoid negative environmental effect from the onset of the production. इसमें क्या कर रहे हैं हम स्टार्टिंग से ही. एंड ऑफ लाइफ स्ट्रैटेजी क्या थी, हम जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है एट द एंड ऑफ माय प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग उस पर फोकस कर रहे हैं. प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्ट्रैटेजी में क्या है, आई एम स्टार्टिंग फोकसिंग ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट. जहां से प्रोडक्ट ने मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट किया वहीं से ही मैंने उसके जो भी environmental concerns थे उसको eliminate करने की कोशिश कर रही हूँ. Then comes the decentralization strategies. Decision involving environmental protection measures can be made at the foreign affiliates of the subsidiary based on the local regulation and the standards. Decentralization strategy में क्या है, अगर मेरी कोई subsidiary किसी foreign country में operate कर रही है तो मैंने उसको full power दी है to operate according to the local environmental standards. ठीक है. वो उसके अपने तरीके से उन standards को adopt कर सकती है and उसके तरीके से अपनी manufacturing activities को modify कर सकती है. That is a decentralization strategy. Fourth is a centralization strategy. Transnational corporations can implement centralized environmental policy across entire company, ensuring a uniform stance on environmental protection and regardless of the country of operations. इसमें क्या है, इट्स जस्ट एन अपोजिट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन. इसमें क्या है, सेंट्रलाइज मतलब मैंने सेंट्रलाइज लेवल पे अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर लिया फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. Then comes the advantages of environmental protection. First is the increased access to export market. Consumer demand for high quality and environmental friendly products, especially in highly developed countries. EU legislation concerning the eco labels have increased the importance of environmental aspect for exporters' competitiveness in the global market. इसका क्या मतलब है कि now consumer क्या demand कर रहे हैं, they are demanding high quality and the environmental friendly products. ठीक है. अगर customers की यही demand होगी, then the company will also focus on manufacturing environmental friendly products. Second is the increased cost productivity. International products are aware of the potential increase in the cost due to fines and penalty for the environmental damage. ठीक है. अगर आपको पता होगा कि government is going to put a fine if अगर आप कोई भी ऐसी environmental activity में आप अगर environment को damage करने की किसी activity में involve होते हो, then you will be restrict yourself from investing in those activities. ठीक है. तो इससे आपकी क्या होगी, आप फाइन से बच जाओगे, पेनल्टीज से बच जाओगे, which will increase. Striking a balance between and the associated environmental cost is essential for securing a competitiveness in the global market. Then there is a public acceptance and access to financing. Transnational corporation face a pressure to be friend of the planet, both at the home and the abroad.
ठीक है, अब क्या है पब्लिक एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि आपको अपनी मार्केट इमेज तो ऐसी रखनी पड़ेगी ना दैट यू आर डूइंग अ सस्टेनेबल बिजनेस, you are investing in sustainable activities. As their public relation image and access to financing from the public, international and the private organization are linked to the environmental policies. अगर किसी भी फर्म की इमेज इस लेवल पे खराब होती है कि दे आर नाउ डूइंग एक्टिविटीज विच आर हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट, ठीक है, तो कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा. ठीक है, सो टू हैव अ गुड मार्केट इमेज, कंपनीज क्या करती हैं, दे आर नाउ इन्वेस्टिंग इन द एनवायरमेंटल एक्टिविटीज. Any doubt in this? Okay, then we'll move forward. So how the environmental issues affects the business ethics? First is harm to humans and animals. Environmental destructions often violates our right to non-injury, endangers our health and harm animals. Any moral system that fails to recognize the importance of protecting animals is flawed. ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स में क्या आता है हमारे कि वी शुड केयर अबाउट द ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड वी शुड नॉट डू एनी हार्म टू देम. Then there is a externalities. Companies that harms the environment have the externalities. That is the cost they have to pay for doing doing the activities which are harming our environment. Companies have to who are violating these environmental regulations, they have to pay the penalties. Then there is a future generation in this. It's a questionable whether we have the right to consume the world resources at the reckless and the destructive rate, as it is a incredibly harmful not only for the future generation but also to the animals. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जुडिशियल यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज, कि हाउ वी आर रिसोर्सिंग using our resources right now. Are we lefting any are we leaving any resources for our next generation or not? अगर अभी से अपने रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज नहीं करेंगे देन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कोई भी रिसोर्सेज नहीं बचेंगे. ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन, that we have to use it very judiciously. Then comes the outlay of pollution control. In this, there are three types. First is the cost benefit analysis, then is the responsible parties, and the last is the payment mechanism. In the cost benefit analysis, one approach is to assess the benefit of expenditure on environmental conservation against the loss incurred by the people. If the benefits outweighs the losses, it is justifiable to bear the cost of protecting the environment. इसलिए मैं क्या करूंगी, cost benefit analysis करूंगी, the cost I am incurring for the activities जिससे मेरे को कम environmental damage हो, and what is the loss incurred by the people. ठीक है, उन दोनों में मैं कंपेयर करूंगी एंड आई प्रेफर कि जो भी अगर benefits are more than the cost, then I'll bear that cost. Then comes the responsibility parties. Some argue that those responsible for damaging the environment should bear the cost of harming it. ठीक है, we should identify the responsible parties जिनों की वजह से environmental damage हो रहा है, while others believe that those who benefit from restoring the environment should pay the most. ठीक है, so there is a conflict. ठीक है, कि जो डैमेज कर रहा है दे शुड पे मोर, और जिसको उसके एनवायरमेंट को रीस्टोर करने से बेनिफिट हो रहा है दे शुड पे मोर. There is a payment mechanism. Payment for the environmental protection can be made through the regulations, incentive, pricing mechanism, pollution permits, and this could be the way by which a payment can be done. It could be in the form of regulation, incentive, pricing, and the pollution permits. Then what could be the business attitude towards environment? Natural world as a free good. Business traditionally viewed the natural world as a free and the unlimited good, leading to the reckless consumption of resources and the environmental damage. Businesses हमने आसपास के environment को कैसे देखते हैं? Like they are the free resources available and they are unlimited in number. ठीक है, so वो उनको क्या करते हैं? They are using it recklessly.
ठीक है, दे आर नॉट यूजिंग इट केयरफुली, वो इसको ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं. देन देयर इज अ दे आर indifference to the environmental protection. Environmental protection are rarely seen as an issue. Company would harm the environment to extent if it is what's profitable for them despite the unwarranted damages. Company क्या करती है, they focus more on their profitability, so they don't focus कि अगर environment को कोई damage हो रहा है. Then there's a shift in attitude. In recent years, the magnitude of pollution and the resource depletion has led to an increased pressure on businesses to adopt a more environmental responsible practices. As we have discussed, कि आजकल के जो investors हैं, they are not really focusing on the companies which are doing a environmental friendly activities. और उन्हीं company में they are investing more. ठीक है, अगर कोई भी company ज़्यादा environmental damage का काम करती है, then the जो investors हैं, they restrain themselves from investing in those companies. Then comes the significance of environmental protection. What could be the significance? First is the economic growth, competitiveness, and the trust and respect. In economic growth, environmental protection can create an additional resource to contain a pollution and protect the environment. There is no direct correlation between the economic growth and environmental degradation. अगर हम इकोनॉमिक प्रोटेक्शन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, सो इट कुड हेल्प टू जनरेट एडिशनल रिसोर्सेज. ठीक है, और it could provide a competitive edge to the companies who are involving in a environmental protection, who are working towards protecting our environment. ठीक है, then comes the trust and respect. Collectively responsibility towards the environment is a vital component of our business strategies, helping to sustain the environment, win the trust of the community and gain the respect of the governments. अगर कोई responsible, if some company is working responsibly towards the environmental protection, so उसकी society में image क्या होती है, अच्छी हो जाती है, and people are more willing to invest in those companies, and government भी उन companies को support करती है. Then comes the environmental consideration for businesses. Any doubt till now? Anurag, I'll share my PPT. I'll mail it to you guys on Monday. Okay. Now we'll finish off this topic. Only 2 slides are left. First is first slide is the environmental consideration for businesses. In this, we are focusing on a waste disposal, energy usage, and day-to-day activities. In the waste disposal, businesses must consider not only the prevention of hazardous waste disposal, but also the impact of their product on a waste management after consumption. इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लास्ट में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके डिस्पोजल पे तो फोकस करना ही करना है, बट along with that कंपनी को किस पे फोकस करना है कि वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द जूसेस जो प्लास्टिक बॉटल्स में मिलते हैं, ठीक है, जो तो कंपनी शुड फोकस कि जब लोग उसको जूस को कंज्यूम कर लेंगे, देन व्हाट वुड हैपन टू दैट प्लास्टिक वाटर बॉटल्स. ठीक है, तो कंपनी को उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि वो बायोडिग्रेडेबल वाटर बनाए, ठीक है, लेस हार्मफुल प्लास्टिक की बॉटल्स बनाए, बिकॉज प्लास्टिक क्या होता है, डिग्रेड तो होगा नहीं, इट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू द लैंडफिल्स. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द एनर्जी यूसेज. कंपनीज आर एक्सप्लोरिंग वे टू रिड्यूस द एनर्जी यूसेज सच एज एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, बिल्डिंग envelope techniques, renewable energy sources and encouraging telecommunicating and carpooling. ठीक है, कंपनी को क्या करना है, एनर्जी कंजम्पशन पे भी अपना ध्यान रखना है कि हाउ दे कैन रिड्यूस देयर एनर्जी कंजम्पशन, सो दे आर नॉट शिफ्टिंग टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. देन इज द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. डे टू डे एक्टिविटीज में कंपनी क्या कर सकती है, जो वो पेपर यूज कर रही है उनको कम से कम यूज कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकती है, एंड जो पेपर्स दे आर यूजिंग दे कैन रिसाइकल दोस पेपर्स. ठीक है, जिससे वो they are contribute to the environmental friendly practices. Then comes the
environmental ethics and future generation. First is a resource consumption. United States consumes the world resources at a disproportionately high rate, raising the question about the right to access the resources from the other nation and reckless rate of consumption, while which can harm future generations and the animals. ठीक है. अब इसमें क्या है कि हम वी आर फोकसिंग ऑन अ डेवलप्ड कंट्रीज विच आर यूजिंग मोर रिसोर्सेज. ठीक है. एंड they are consuming it as a at a reckless manner. Then comes the externalities. Business traditionally saw no need to pay for the externalities, but now they understand the grave importance of the externalities. Externalities कहते हैं they are the external factors, ठीक है, which are affect the activities of the company. Then comes the environmental damage. Environmental damage has been incredibly harmful to the people, and many environmental issues can create even more significant problem in the future, such as the possible depletion of the world resources for the future generation. So, अगर environmental damage होता है, it will be a harmful act. It will be harmful for all the people living on the world, living in this world. ठीक है. So, जो organization है, they should work in a manner which is environmental friendly. So by this, we complete today's topic. Now we'll discuss your doubts. Monday class नहीं होगी. This is your last revision class. All of you can, as Anurag has mailed me, all of you can take a presentation from the Anurag. I'll mail it to him on Monday. But please also buy books or issue it from the library, क्योंकि presentation में they are only the brief points. ठीक है. In detail, you have to read it from the books. ओके, विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस. बट अभी जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया, इससे रिलेटेड कोई डाउट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, क्रॉस रेट्स में, बिड रेट में, आस्क रेट में, एफडीआई में, एनी डाउट इन दीज टॉपिक्स?